Okay, students, so let's get started with IGCSE Physics, May June 2023, Paper 4, Variant 2. Start करते हैं इसके साथ बेटा. Figure 1.1 shows a helicopter which is stationary at a height of 1500 meter above the ground. ठीक है भाई, एक हेलीकॉप्टर है that is stationary at a height of 1500 meters above the ground. Okay. State two condition necessary for the helicopter to remain in equilibrium. अच्छा जी, कौन सी दो conditions हैं necessary for the helicopter to remain in equilibrium? बहुत easy conditions हैं. For equilibrium, the resultant force should always be equal to zero and आपका resultant moment should always be equal to zero. ठीक है, ये दो बातें बेटा हमेशा याद रखो. इक्विलिब्रियम के लिए आपकी रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए और रिजल्टेंट मोमेंट हमेशा जीरो होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. द मास ऑफ द हेलीकॉप्टर इज दिस इज योर मास. ओके. Calculate the change in gravitational potential energy of the helicopter as it rises from the ground to 1500 meter. अच्छा जी, change in gravitational potential energy निकालनी. How will you do that? mg into change in height. मास क्या है बेटा? 3200 kg. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 9.81. चेंज इन हाइट क्या है? 1500. कैन यू कैलकुलेट द. अच्छा, आईजीसीएसई में यू विल टेक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एज 9.8 नॉट 9.81. ये 9.81 ए लेवल्स में लेते हैं. 3200 into 9.8 into 1500. Your answer comes out to be 4.7. Oh, 4.7 10 raised to the power of 7 joules is your change in gravitational potential energy बेटा. आगे बढ़ते हैं. अच्छा बेटा, चलो लेट्स रीड दिस आउट. फिगर 1.2 shows a vertical speed time graph for a parachutist who jumps from a stationary hot air balloon. Okay. The parachutist jumps from the balloon at time t is equal to 0. अच्छा, बलून से आप जंप कर रहे हो at time t is equal to 0 and reaches the ground at B. Okay. The point A indicates where the parachute opens. अच्छा, यहाँ पे आपका पैराशूट ओपन हो रहा है. बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर यू सी द स्पीड टाइम ग्राफ, जब भी आपने स्पीड टाइम ग्राफ देखना है आपने एक या दो की पॉइंट्स लाजमी याद रखने. What are the two key points that you must remember whenever you see a speed time graph? The gradient of the speed time graph is equals to what? Acceleration. Second key point क्या याद रखना है? Area under the speed time graph is equals to your distance. ठीक है, ये दो की पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं. द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन. द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस. परफेक्ट. The point A indicates where the parachutes open. Okay. On figure 1.2, label a point on the graph where the acceleration is 0 with 1. बेटा अब यहाँ पे हमने लेबल करना है एक्सेलरेशन कहाँ पे जीरो होगी. द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट अ पॉइंट जहाँ पे आपका ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज जीरो. क्या आप रियलाइज कर सकते हो इन दोनों येलो हाइलाइटेड रीजन्स में यू हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जीरो होता है. एट बोथ दीज पॉइंट्स योर एक्सेलरेशन विल बी जीरो. आप यहाँ पे भी वन मार्क कर सकते हो या आप यहाँ पे भी वन मार्क कर सकते हो. बोथ विल बी मार्क्ड करेक्ट. ठीक है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे. वेयर इज द एक्सेलरेशन नेगेटिव? अच्छा जी, बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपका ग्रेडियंट नेगेटिव है. इज देयर एनी लाइन जहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव है? हाँ, ये ब्लू वाली लाइन. हेयर यू हैव अ नेगेटिव ग्रेडियंट. यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव. हेंस योर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. आप इसको 2 मार्क कर दो. डिक्रीजिंग. वेयर इज द ग्रेडियंट डिक्रीजिंग बच्चों? ग्रेडियंट कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है? इन दिस रीजन. Can you realize in this region the gradient is positive but decreasing? That's why a decreasing curve. इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है या डिक्रीजिंग है. दिस इज योर पॉइंट 3. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस द चेंज इन मोशन. अच्छा जी, आपने चेंज इन मोशन बताना है. विच occurs when the parachutist leave the hot air balloon until point A. आपने बताना है in terms of forces the change in motion which occurs from the parachutist
leaving the hot air balloon until it reaches point A. क्या चेंज इन फोर्सेस अकर कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टिल पॉइंट ए? थोड़ा सा गौर करो. At time t is equal to zero, the only force acting on the object, yeah, the only force acting on the person, the change in motion occur, huh, the only force acting on the parachute is at time t is equal to zero will be its weight. ठीक है. So you will say at time t is equal to zero, the only force acting on the parachutist, on the parachutist is its weight. This causes this causes the acceleration to be equal to 9.8 meters per second square. बेटा जब आपका सिर्फ और सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है एट द स्टार्टिंग, your acceleration is equal to 9.8 ms minus 2. Furthermore आप क्या कहोगे? As the speed of parachutist increases, जैसे ही parachutist की speed increase करती है, what will happen? As the speed of parachutist increases, the air resistance increases. This causes the resultant force to decrease. This causes the resultant force to decrease. जैसे ही आपकी एयर रेजिस्टेंस इन प्ले आती है, क्या होता है? Your resultant force decreases. आगे क्या लिखोगे? As resultant force decreases, what will happen? Acceleration becomes less than 9.8, becomes less than 9.8 meters per second square. आगे क्या कहोगे बेटा? What will you further say? At या इसको इस तरह लिख सकते हो. You can say at a certain point, air resistance becomes, या at a certain point लिख सकते हो, at a certain velocity लिख सकते हो, at a certain velocity बेहतर होगा. After, yes, किस तरह लिखो? After reaching a certain velocity, air resistance या force of air resistance equals weight, equals weight. This causes resultant force to be zero, to be zero, and acceleration becomes zero as well. Simple. The parachutist is now moving at a constant speed, a constant velocity known as terminal velocity. Obviously, you can skip some points. I am writing as detailed answers as possible ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर एक दो पॉइंट्स भूल भी जाएं तो यू स्टिल गेट फुल मार्क्स. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. A student catches a cricket ball. Okay. The speed of the ball immediately before it is caught is 18 meters per second. The mass of the ball is this. Calculate the kinetic energy. How will you calculate the kinetic energy? Kinetic energy is equals to half m v square. बेटा मास को किस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? इन के जी 0.16. वेलोसिटी क्या है? 18 का स्क्वायर. What does your kinetic energy comes out to be? हाँ जी,
kinetic energy comes out to be 26 joules. Simple. 3 marks for this easy peasy question. It takes zero point 0.1 seconds to catch the ball and bring it to rest. Okay, so your final velocity is 0. Calculate the average force. Average force किसके equal होता है? Change in momentum over change in time. How can you calculate change in momentum? Mass into change in velocity over change in time. What is your mass? 0.16. बेटा क्या आप realize कर सकते हो? Your final velocity is 0. Your initial velocity is 18. Your change in velocity will be 18. What will be your change in time? 0.12. Can you calculate the force? बेटा force निकाल सकते हो. The force comes out to be 24 Newton. Simple. आगे बढ़ते हैं. As the student catches the ball, she moves her hands back. जैसे student ball को catch करती है, she moves her hands backward. Explain the effect of this action on the student's hand. As you move the hand backward, what will happen? The time of collision increases. Now, just focus on the board. Resultant force is equal to what? Change in momentum over change in time. बेटा आपका change in momentum तो constant रहेगा. Can you write it like this? Force is inversely proportional to the change in time or time of collision. If you are moving your hands backward, your time of collision is increasing. If your time of collision increases, your resultant force decreases. आपकी longer impact time होगी. Resultant force will decrease. So you will say, as she moves the hands backwards, the time of impact, yeah, the time of collision increases. The time of impact increases, causing the resultant force to decrease. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. लेट्स मूव अहेड. अच्छा जी. Figure 3.1 shows a person moving across an ice covered pond to reach a ball on the ice. Okay. Explain why this way of moving across the ice is safer than walking. Use your understanding of pressure in your answer. बेटा क्या आप देख सकते हो? If the man is lying down on ice, what is happening? Contact area आपका increase हो गया है. What is the formula of pressure? Pressure is equal to force over area. यहाँ पे हम प्रेशर को किस तरह लिख सकते हैं? Pressure is equal to the weight of the man divided by area. Can you realize weight will remain constant? Pressure becomes inversely proportional to area. When you are lying down on the ice, your area becomes wide or your area increases, your pressure decreases. Hence, there is a much safer way than walking. क्योंकि यहाँ पे आपका एरिया इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है. दिस इज अ मच सेफर वे ऑफ मूविंग ऑन द आइस. सो आप क्या कहोगे यहाँ पे? यू विल से यू विल से since since the weight of the person है, क्या है ये कहीं लिखा हुआ है? since the, हाँ, since the weight of the person is constant, pressure becomes inversely proportional to area. Becomes inversely proportional to area. As the area is greater in this position, the force, yeah, the pressure, as the area is greater in this position, what will happen? The pressure is lower. The pressure is lower. If the pressure is lower, there is a less likely chance of
आइस टू क्रैक। बेटा अब अगर जो पर्सन आपकी आइस पे प्रेशर लगा रहा है वो कम है, इफ द प्रेशर दैट द पर्सन अप्लाइज ऑन द आइस इज लेस, then there is a less likely chance of the ice to crack. Hence, this is a much safer way to move on ice rather than walking. So, how did I explain this? I said that the weight of the person is constant, hence, pressure becomes inversely proportional to area. This. As the area is greater in this position, the pressure is lower. There is a less likely chance of ice to crack. This is a much safer way of moving on ice. Perfect. Let's see this. Figure 3.1 shows a side view of the pond with a layer of ice floating freely on water. अच्छा जी, ये layer of ice है, ये water है. The surface area of the pond is this. Okay, this is your area. The mass of the ice is this. Perfect. This is the density of the ice. This is the height of the water below the ice. Sorry, this is the height of the water below the ice. Okay. You have to calculate the pressure at point X. You have to calculate the pressure at point X. How are you going to do that? Beta, pressure at point X is a summation of the pressure due to ice plus the pressure due to water. अब आइस क्या है? सॉलिड. तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फोर्स ओवर एरिया. वाटर क्या है? फ्लूइड. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रो जी एच. ओके. Now, what is the mass of ice? 690. Can you calculate the weight of ice? 690 into 9.8 divided by area. Area क्या है? 5. Plus, how will you calculate the pressure of this water? What is the density? 1000. Into gravitational field distance, that is 9.8. Into the height, that is 0.45. निकाल लो बेटा क्या आंसर आता है. 690 into 9.8 divided by 5 plus 1000 into 9.8 into 0.45. This comes out to be what? 5762 pascals. If I round it off till two significant figures, 5800 pascals is your pressure at point X. ठीक है? This is your pressure at point X. Now, pressure at point X हमने किस तरह निकाला? Let me recap it. बेटा ये जो आप X पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे जो प्रेशर है, दिस विल बी ड्यू टू द आइस प्लस द वाटर. आइस इज अ सॉलिड. सॉलिड पे प्रेशर किस तरह निकालते हैं? फोर्स ओवर एरिया. वाटर इज अ लिक्विड. लिक्विड पे प्रेशर किस तरह निकालते हैं? रो जी एच. हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ आइस? यू टेक द वेट ऑफ आइस एज द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया. नाउ फ्लूइड का प्रेशर कैसे निकालेंगे? रो जी एच. डेंसिटी क्या है? 1000. 9.8 इंटू हाइट. This pressure at X comes out to be 5800 Pascal. Simple as that. Nothing complicated. Here आगे बढ़ते हैं. The temperature of a fixed mass of a gas at constant volume is decreased. अच्छा जी, टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं. What will happen? State and explain in terms of particles how the pressure of the gas changes. बेटा अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, what will happen? The velocity of the particles decreases. They have a smaller kinetic energy. Since they have a smaller velocity, smaller kinetic energy, the collision frequency decreases. As the collision frequency decreases, the particles collide less likely. स्मॉलर फोर्स जनरेट होगी. स्मॉलर फोर्स जनरेट होने की वजह से देर इज लेस प्रेशर पर यूनिट एरिया. सो हाउ विल यू राइट इट? यू विल से एज टेम्परेचर डिक्रीजेस. आप क्या कहोगे? As temperature decreases, the velocity of particles decrease. The velocity of particles decrease, causing the kinetic energy of particles to decrease. आई थिंक या यहाँ पे पार्टिकल्स का ही वर्ड यूज हुआ है तो हम पार्टिकल्स ही यूज कर रहे हैं. Causing the kinetic energy of particles to decrease. What will further happen? This causes the collision frequency to decrease. Honestly, I think I have written this answer a million times. This causes the collision frequency to decrease. Hence, a smaller
force acts per unit area, leading to a smaller pressure. ठीक है, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन प्रेशर. ठीक है. तो क्या हो रहा है, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीज. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी. एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज देयर इज अ स्मॉलर फोर्स पर यूनिट एरिया, हेंस द प्रेशर डिक्रीजेज. यही लिखा हुआ है, दिस कॉजेज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी टू डिक्रीज, हेंस अ स्मॉलर फोर्स एक्ट्स पर यूनिट एरिया लीडिंग टू अ डिक्रीज इन प्रेशर. State the value of absolute zero in degree centigrade, negative 273 degree centigrade. State what is meant by the term absolute zero referred to particles in your answer. बेटा absolute zero पे क्या होता है? Particles have the least kinetic energy. यहाँ पे आप लिख लो absolute zero is the lowest possible temperature and at this temperature and at this temperature, particles have the lowest kinetic energy. Simple. आगे बढ़ते हैं. Cylinder 1 has a volume of 350 cm cube of gas at a pressure of this. Okay. The gas is transferred to cylinder 2 with a pressure of this. The temperature remains constant. Whenever your temperature is constant, you apply Boyle's law. In such circumstances, P1 V1 is equals to P2 V2. लिख देते हैं यहाँ पे. P1 V1 is equals to P2 V2. You have to calculate what? Volume of the second cylinder. You have to calculate V2. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल P1 क्या है? 9 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 4. V1 क्या है? 350. P2 क्या है? 1.6 10 इज द पावर ऑफ 5. V2 क्या है? हमने निकालना है, डिवाइड कर दो. 9 into 10 is the power of 4 into 350 divided by 1.6 into 10 is the power of 5. What does your volume V2 comes out to be? Volume V2 comes out to be 200 cm cube. Simple. Let's further move ahead. Figure 5.1, okay, shows an electrical heater to heat a room. Perfect. The dimensions of the room are 4.5, 6.1, 2.4. The density of the air is this. You have to show that the mass of the air is this. Density is equals to mass over volume. How will you calculate mass? Mass is equals to density into volume. Density क्या है बेटा? 1.2. How will you calculate the volume? 4.5 into 6.1 into 2.4. Can you calculate the answer? 1.2 into 4.5 into 6.1 into 2.4. The mass comes out to be 79 kg. Yeah, this is correct. अब आगे बढ़ते हैं. The power of the heater is this. The specific heat capacity of air is this. We calculate the time taken to increase the temperature of air in the room from initial temperature of 16 to a final temperature of 20. First of all, तो एक काम कर लेते हैं. Let's apply Q is equals to mc delta T. Mass क्या है? 79. Specific heat capacity is 1000. How will you calculate change in temperature? Final is 20. Initial is 16 minus कर दो. 79 into 1000 into 4. बताओ आंसर क्या आ रहा है बेटा? 79 into 1000 into 4. This comes out to be what? 316,000 joules. Simple. Nothing complicated here. अब बेटा आपने जो है वो टाइम निकालना है. How will you calculate the time? How will you calculate the time बेटा? टाइम किस तरह निकालोगे? कोई फॉर्मूला सिखाया था मैंने? Yes. Power is equals to energy over time. This is actually your energy. Power given है 1100 volts. Energy क्या है? 31600. You calculate time. Time किसके इक्वल आ जाएगा? 316,000 1100. Can you calculate the time? 31600 divided by 100.
your time comes out to be 287 seconds rounded off to टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हो जाएगा 290 सेकेंड्स। देखो हमने हर चीज को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है इन आईजीसीएसई। ओके ओके, लेट्स सी दिस। Suggest one reason why the time calculated in A part 2 is the minimum time needed to increase the temperature of air in the room from 16 to 20 degrees centigrade. बेटा ये minimum time क्यों है? Because some heat will be absorbed by the furniture as well. कुछ हीट जो है वो फर्नीचर वॉल्स वगैरह हर चीज एब्जॉर्ब कर लेंगी। सो यू कैन से सम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द furniture slash walls. Perfect. Figure 5.2 shows a cross section of a double glazed window in the room. Okay. ये cross section है of the double glazed window. State the main methods of thermal energy transfer from the room to the outside which are reduced by this type of window. बेटा देखो, आपके पास एयर होती है इनसाइड अ डबल ग्लेज विंडो। देखो डबल ग्लेज विंडो के बीच में एयर होती है। अब एयर की वजह से हमेशा दो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो जाते हैं। एयर ऑलवेज रिड्यूसेस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। एयर जो है वो दो तरह के हीट ट्रांसफर के मोड्स को रिड्यूस करती है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। लेट्स फर्दर मूव अहेड। स्टेट टू टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स आर पी वेव्स एंड एस वेव्स। स्टेट द टाइप ऑफ वेव्स दैट आर पी वेव्स एंड एस वेव्स। अच्छा पी वेव्स कौन सी होती हैं, एस वेव्स कौन सी होती हैं, हमेशा याद रखो। पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेटा, longitudinal waves. S waves are what? Transverse waves. Okay. The velocity of P wave in the Earth's solid crust is this. This is your velocity. Its frequency is this. You have to calculate the wavelength. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V is equals to F lambda. अब थोड़ा सा गौर करो, वेलोसिटी किसमें गिवन है? किलोमीटर्स में। So you will put 7.2 10 raised to the power of 3. फ्रीक्वेंसी क्या है? 4.5 हर्ट्ज। वेवलेंथ यहाँ पे आ गई 7.2 into 10 is the power of 3 divided by 4.5. What does your lambda or wavelength comes out to be? निकालो ज़रा 7.2 10 is the power of 3 divided by 4.5. Your wavelength comes out to be 1600 meters is your wavelength. Simple. Correct to two significant figures भी आपने ये लिख दिया, 1600 meters is your wavelength. आगे बढ़ते बेटा। अच्छा जी, फिगर 7.1 शोज अ कंटेनर ऑफ ऑयल। ठीक है भाई, कंटेनर ऑफ ऑयल है। अ लाइट शाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑयल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.47। परफेक्ट। ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द रे एंटर्स द ऑयल। तो नॉर्मल किस तरह ड्रॉ कर दोगे? इस तरह। दिस इज योर नॉर्मल। परफेक्ट। द एंगल एक्स इज 56 डिग्री। अच्छा ये क्या है बेटा? 56 डिग्री है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा जी, हमने वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालनी है। बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट ये छोटा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब कैसे निकालेंगे? जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, हैव अ चिल कप ऑफ टी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरह निकालें? हाउ डू यू कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस? आई वेरी इजी। Can you realize this entire angle is 90 degree? बेटा टोटल एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एक्स, दैट इज 56 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ जाएगा? 90 माइनस 56, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 34 डिग्रीज। आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गई बेटा? 34 डिग्रीज। बट आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नहीं निकालना, यू हैव टू कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब क्या आप रियलाइज कर सकते हो? ऑयल इज द सेकेंड मीडियम। ऑयल क्या है? सेकेंड मीडियम। हाउ डू यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम? साइन आई ओवर साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम क्या है? 1.47। साइन ऑफ एंगल आई दैट इज 34
divided by sine of r. Can you make sine r the subject? Yes. Sine r is equal to sine of 34 divided by 1.47. Can you calculate r? R is equal to sine inverse sine 34 divided by 1.47. Can you calculate the answer, beta? आंसर निकाल सकते हो बेटा साइन 34 divided by 1.47. Your answer comes out to be what? 22.35 degrees. Obviously, you round it off till two significant figures. 22 degrees is your angle of refraction. ठीक है, आपने हर आंसर को दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है. State the approximate speed of light in air. 3 into 10 is the power of 8 meters per second. Perfect. Let's further move ahead. Calculate the speed of light in oil. Give your answer to three significant figures. How will you calculate the speed of light in oil? Speed of light in oil कैसे निकालोगे? Refractive index is equals to what? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? Refractive index is the speed of light in air divided by the speed of light in any other object. Refractive index of oil क्या था? The refractive index of oil was 1.47. Velocity of light in air क्या थी? 3 into 10 is the power of 8. You have to calculate the speed of light in oil. Make oil की speed as subject. 3 into 10 is the power of 8 divided by 1.47. What does your answer comes out to be? Your answer comes out to be 2.04 10 raised to the power of 8. 2.04 10 raised to the power of 8 meters per second. You can also write it as that. इसको आप किस तरह लिख सकते हो? दो सिग्निफिकेंट फिगर पे. If you want to write it till two significant figures, you can say till two significant figure this will be equal to 2.0 10 raised to the power of 8 meters per second. ठीक है, either answer will be considered correct. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं. ओके, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है, या डेफिनेशन क्या होती है? रीजन इन विच अ मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, या रीजन इन विच अ मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. यू कैन से रीजन इन विच अ मैग्नेटिक पोल experiences a force. ओके, आगे पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है? यू हैव टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द नॉर्थ पोल. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल. यहाँ पे लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड is in the direction of force on the North Pole. Simple. आगे बढ़ते हैं. Figure 8.1 shows a negatively charged metal sphere. Draw four lines to show the electric field and its direction. बेटा हमेशा याद रखो, नेगेटिवली चार्ज स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गो इनसाइड अ नेगेटिवली चार्ज स्फेयर लाइक दिस. अब एग्जामिनर ने हमें कितनी फील्ड लाइंस बनाने के लिए बोली है? चार. वी विल बी ओवर एफिशिएंट. वी विल ड्रॉ 8. लेट्स से लाइक दिस. ओहो, why does this one node disturbs me? ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सिंपल. लेट्स फर्दर मूव अहेड. फिगर 8.2 शोज अ सर्किट. ठीक है, ये आपको एक सर्किट दिख रहा है. परफेक्ट. सो यू हैव थ्री सेल्स इन दिस सर्किट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. एक वोल्ट मीटर है, रेजिस्टर्स हैं तीन, और ये क्या है बेटा? ये है एक डायोड. डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा ट्रायंगल, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा लाइन. ओके,
The three cells are identical and have zero resistance. Okay, resistance R1, R2 and R3 are identical. मतलब इसकी रेजिस्टेंस भी R है, इसकी रेजिस्टेंस भी R है बेटा, और इसकी रेजिस्टेंस भी R है. ओके, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सबकी रेजिस्टेंस सेम होती है. द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 6 वोल्ट्स. अच्छा जी, वोल्ट मीटर पे रीडिंग क्या आ रही है? 6 वोल्ट्स. ओके. When the diode is conducting, it has zero resistance and zero potential difference across it. Okay. Determine the EMF of one cell. बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग आ रही है? 6 वोल्ट्स. 6 वोल्ट्स इज इक्वल टू 3 सेल्स. एक सेल का कितना ईएमएफ होगा? रेशियो मेथड लगा लो. 2 वोल्ट्स इज योर आंसर. अगर 3 सेल्स का वोल्टेज 6 है, एक सेल का क्या हो जाएगा? 2. सिंपल. Determine the ratio of the potential difference across R2 to the potential difference across R3. अच्छा जी, R2 R3 है का? ये है R3, ये है R2. Okay, so now we have to determine the ratio of the potential difference across R2 to the potential difference across R3. First of all, गौर करेंगे बेटा. Can you realize R1 and R2 are in parallel? So whatever the potential difference is across R1 will be the potential difference across R2, है ना? And they are in parallel. So let's combine them together. 1 over the resistance of the parallel circuit. Yeah, the resistance of the parallel resistor is 1 over R1 plus 1 over R. Resistance in parallel क्या हो जाएगी? R over 2. You can resolve this entire fraction. I am not doing that. हमें पता चल गया R1 R2 are in parallel. Both of them will have the same voltage. V1 will be equal to V2. We have to calculate. And the voltage across R3 is what? V3. We have to calculate the ratio of voltage V2 divided by V3. I think we have to do this. We have to calculate the voltage across V2 divided by the voltage across V3. First of all, let's redraw the circuit. Positive, negative, positive, negative, positive, negative. Can you realize R1 plus R2 are giving a total resistance in parallel of what? R over 2. Then you have a diode like this. Then you have this R3 as R. Now, sir, how are we going to calculate the voltage V2 here? And how are we going to calculate voltage V3 here? For this, we have a very simple rule known as the voltage divider rule. बेटा किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस आपने अगर वोल्टेज निकालनी है, यू विल टेक द रेजिस्टेंस of the component divided by the total resistance multiplied by the total voltage. So first of all you have to calculate V2. Resistance क्या है? R over 2. What is the total resistance? R plus R, that is 1.5 R. Multiplied by the total voltage. Total voltage क्या था? 6 volts. Okay, 6 आ गया इधर. R cancel out. What will your answer come out to be? 1 divided by 2 divided by 1.5. 1 over 3 multiplied by 6. This becomes 1. This becomes 2. The voltage across the resistor 2 is what? 2 volts. बेटा ये V1 भी 2 volts के equal होगा. This V2 will also be equal to 2 volts because they are in parallel. R2 के across कितनी voltage हो गई? 2. The remaining voltage will be provided to R3. R3 में remaining voltage आएगी. That is 6 minus 2. That is 4 volts. The voltage across R3 is 4 volts. V2 क्या है? 2. V3 क्या है? 4. 1 over 2 is your ratio. Perfect. So the ratio of voltage of 2 divided by the voltage of 3 is equals to 1 over 2. Simple. Now all cells are reversed. State and explain the change in current in R1. बेटा अगर आप सेल्स को रिवर्स कर दोगे लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, can you realize the negative terminal of the cell is connected to the positive terminal of the diode?
डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड। अगर डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, करंट इन ब्रांच वन 0 एम्पेयर हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर as the cells are reversed, the diode becomes reverse biased. Current I1 equals to 0 ampere. Determine the new value of the ratio of the potential difference across R2 to the potential difference across V2. V2 over V3 का अब आपको नया रेशो चाहिए if the battery terminals are reversed. So let me zoom out a bit. Let's rearrange the working in a very cute and good manner. Okay, this was your old circuit. ये आपका पुराना circuit था. This was your voltage divider rule. Let's keep it here. This is your old circuit. Let's keep it here. ओल्ड सर्किट में ये टोटल रेजिस्टेंस आर ओवर टू कैसे निकाली थी, ये वाली चीज करके, तो इसको भी यहाँ पे रख दो बेटा. एंड देन यू कैलकुलेटेड द रेशो V2 ओवर V3, दैट वाज 1/2. ठीक है, ये पुराने सर्किट की बात हो रही थी सारी. नाउ लेट्स लुक एट द न्यू circuit. What is happening in the new circuit? In the new circuit, the current in the first branch is 0. You can ignore this branch and draw a circuit like this. ये आ गया आपका R2, ये आ गया आपका R3. R2 has a resistance of R, R3 has a resistance of R. Let's zoom in, enjoy the show. Total voltage क्या है 6. Both of them have equal resistances. तो इसको भी 3 volts मिल जाएगी, इसको भी 3 volts मिल जाएगी. V3 is 3 volts. V2 is also 3 volts. Can you now realize V2 over V3 क्या हो जाएगा? 3/3, that is equals to 1. तो जब आपका डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, यू कैन अज्यूम इट टू बी नथिंग. अगेन सर्किट बनाओ, V2 over V3 का रेशियो अब क्या हो गया? 1. लेट्स फर्दर मूव अहेड. टेबल 10.1 shows some properties of alpha, beta and gamma radiation. अल्फा में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं अल्फा पार्टिकल्स में? 2. In beta particles, what are the number of protons? 0. What is the charge? Negative 1.6, 10 raised to the power of minus 19. What are the number of neutrons in gamma? 0. What is the charge on gamma? 0. Gamma are stopped by a thick sheet of lead. Gamma particles stop होते by a thick sheet of lead. Okay. State how beta decay changes the nucleus of an atom. बीटा डिके की वजह से आपका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम किस तरह चेंज होता है? यस, व्हाट विल यू से? द प्रोटॉन नंबर increases by 1 and न्यूट्रॉन नंबर, या कह सकते हो हाँ, न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीजेस बाय 1 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज बाय 1. जब भी आपका बीटा पार्टिकल एमिट होता है बेटा, हमेशा याद रखो प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज बाय 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज बाय 1. ओके. A radiation detector used in a laboratory detects a background radiation of 30. अच्छा जी, background radiation क्या आ गई? 30. A radioactive source is placed in front of the radiation detector. The initial reading on the detector is 550. अच्छा जी, initial reading क्या है? 550. The half life is this. You have to calculate the expected reading after 75 minutes. बेटा आपकी इनिशियल रीडिंग क्या है? 550. दिस इंक्लूड्स द बैकग्राउंड रेडिएशन. बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस कर दो. 520 इज विदाउट बैकग्राउंड रेडिएशन. अब एक हाफ लाइफ बाद, आफ्टर 25 मिनट्स, व्हाट विल हैपन? योर रीडिंग विल बिकम हाफ. आफ्टर अनदर 25 मिनट्स, व्हाट विल हैपन? ये 130 हो जाएगी. आफ्टर अनदर 25 मिनट्स ये क्या हो जाएगा? 65. But this 65 की reading doesn't include background radiation.
So you add the background radiation as well, 30. The final reading comes out to be 95 counts per minute. तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया? Initially, your reading was 550. I subtracted the background radiation. This comes out to be 520. After 25 minutes, after an half life, the reading becomes 260. After another half life, the reading becomes 130. After another half life, the reading becomes 65. तो टोटल कितना टाइम हुआ? 25 प्लस 25 प्लस 25, दैट इज 75. 75 मिनट्स बाद आपकी रीडिंग क्या हो गई? 65. 65 प्लस 30 की बैकग्राउंड रेडिएशन, द फाइनल आंसर इज 95 काउंट्स पर मिनट. इससे टू सेफ्टी प्रिकॉशंस टेकन व्हेन मूविंग, यूजिंग और स्टोरिंग रेडियो एक्टिव सोर्सेज. रेडियो एक्टिव सोर्स किस में स्टोर करते हैं? स्टोर रेडियो एक्टिव सोर्स, radioactive source in a lead box. And what is another precaution? Have limited exposure time. बेटा जब भी आप रेडियो एक्टिव सोर्स के साथ काम कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव लिमिटेड एक्सपोजर टाइम. ठीक है, आप ज़्यादा एक्सपोज ना हो रेडियो एक्टिव सोर्स. लेट्स सी दिस. स्टेट द इक्वेशन दैट डिफाइन द average orbital speed of a planet. State the meaning of any other symbols that you use. Orbital speed is equals to 2 pi r over t. अच्छा जी. R क्या है? What is R? R is the radius of the orbit. T is your orbital period. R is equals to your radius of orbit. T is your time period. Simple. Suggest why countries that are a significant distance from the equator experience significant temperature variations throughout the year. बेटा वो कंट्रीज जो इक्वेटर से बहुत दूर होती हैं, व्हाई डू दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट टेम्परेचर वेरिएशंस थ्रू आउट द ईयर? व्हाट विल यू से? रे फ्रॉम द सन स्ट्राइक द कंट्री एट डिफरेंट एंगल्स थ्रू आउट द ईयर. यू विल से रेज फ्रॉम द सन strike the countries, strike the countries at different angles throughout the year, at different एंगल्स थ्रू आउट द एयर. इस वजह से टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है डिफरेंट एंगल्स थ्रू आउट द एयर. सिंपल. Fill in the gaps about a star much more massive than the sun. The stage that follows the stable star in the life cycle of the star is the red super giant. बेटा जब भी आपका स्टार much more massive होगा than the sun, you will form a red supergiant. It then explodes as a supernova to form what? To form a nebula. और nebula के बाद क्या होता है? Nebula के बाद you either form a neutron star or a black hole. Neutron star or a black hole. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. Let's further move ahead. A galaxy is moving away from Earth with a speed of this. अच्छा जी, ये आ गई आपकी speed. The Hubble space constant is this. Okay, this is your h naught. अच्छा जी, इसको हम रख देते हैं h naught के equal. You have to calculate the distance from the galaxy to the Earth. आपने d निकालना है. How will you do that? V is equals to h naught t. V की वैल्यू क्या है बेटा? 33000. और ये क्या है? किलोमीटर्स में है. 10 is the power of 3. Hubble space constant क्या है? 2.2. 10 is the power of minus 18. Can you calculate the distance d? Yes, 33000. 10 is the power of 3 divided by 2.2. 10 is the power of minus 18. Your distance comes out to be what? निकालो बेटा डिस्टेंस क्या आता है. This comes out to be this comes out to be 1.5. 10 raised to the power of 25 meters. अभी आपका डिस्टेंस आ गया, बट यू हैव टू गिव इट इन लाइट ईयर्स. बेटा एक लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. व्हाट इज दैट इक्वल टू? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 raised to the power of 8. हाउ मेनी सेकेंड्स डू यू हैव इन 1 ईयर? 365 डेज होते हैं. एक डेज में 24 आवर, 24 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट्स में 1 सेकेंड इन ईच मिनट. Can you calculate the value of light year? 3 into 10 is the power of 8 into 365 into 24 into 60 into 60.
The light year ka distance comes out to be what? 9.46 10 raised to the power of 15 meters. This is the distance that is equals to 1 light year. अब आप क्या करोगे? डिवाइड कर दो. 1.5 into 10 raised to the power of 25 divided by the distance of 1 light year, 9.46 10 raised to the power of 15. How many light years do we have? 1.5 into 10 raised to the power of 25 divided by answer. We have 1.6 10 raised to the power of 9 light years ka difference between the galaxy and the Earth. Simple as that. This marks the end of this paper. If you have any questions, you can ask in the comments below.